In today's episode of Two Slips and a Gully, we have with us a personality जिनके पैशन और विजन ने ना सिर्फ भोपाल को टॉप स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज दी बल्कि भोपाल को अपनी क्रिकेट टीम भी दी. सो प्लीज वेलकम द ओनर ऑफ भोपाल लेपर्ड्स, मिस्टर अभिषेक मोहन गुप्ता. Are we rolling? Ready? Welcome to Two Slips and a Gully. What is the meaning of cricket for you? Cricket was something which gave me identity at first. At age of 13, I was part of the Indian junior team, India under 14. And I think that's where the journey really started. From there, 14, 16, 19, senior division, played everything, played a little bit for Yorkshire, played for my university in the UK. So I think that is how the journey has been. And I think cricket is part of everyone's life in India. And for me, it is even more closer because I've played the game, I've been there, I've seen the other side. And now making a team and being part of it, I think gives a fulfillment of a sort that how this whole journey has been as a cricket player. क्रिकेट टीम लेने का आइडिया कैसे आया? When this MPL was happening, हमारे यहाँ एक डीन है, डॉक्टर विवेक खरे. ही इज़ ऑल्सो वेरी बिग क्रिकेट बफ. उन्होंने कहीं रैंडम न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग हो रही है. एंड बाय टाइम हमने देखा, इट वाज ओनली 5 days लेफ्ट. आई रीच्ड आउट टू मिस्टर सिंधिया saying that I am very keen to buy a team and I have a cricket background and I really want to, through this team, want to give out back to the cricket fraternity who has given me so much. All the stars aligned and we were there on the day of launch of the team, and we were lucky that we got Bhopal. I think that was our target. Aman, who's the director in HMD Sports, he and me literally prepared all the documentation in 24 hours and submitted it. So it was a hustle. Luckily सब documents भी थे हमारे पास, सब कुछ था. We were on structure, we were set. And I think somewhere, क्योंकि हमने क्रिकेट खेला है, तो I think that overall thing really worked out and we were lucky to have the team with us. थोड़ा सा पहले साल के बारे में बताइए, क्या चैलेंजेस आए, हाउ डिड यू ओवरकम देम, थोड़ा उसके बारे में बताइए. I think honestly पहले साल तो पता ही नहीं था टीम चलाते कैसे. I remember we bought the team on 23rd 20th of April. 15 मई को ड्राफ्ट, 25 मई को पहला मैच. तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या एकदम से. It was just very quick everything. But I think first year was more a learning curve for us as a team, but also as a league, there were a lot of things which they learned. बट हमारे लिए अगर मैं स्पेशली भोपाल लेपर्ड्स की बात करूँ, वी वर वेरी क्लियर फ्रॉम ईयर वन कि व्हाट इज़ द वे वी वांट टू रन द टीम. बट आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग बिकॉज लाइट्स में खेल रहना था, ग्राउंड्स चाहिए थे, एंड अनफॉर्चुनेटली भोपाल डजंट हैव ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर. मैं यही इसी से पूछना चाहूँगा, फ्लड लाइट्स के पीछे की क्या कहानी है? काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. जब एयर वन में हमने ट्रेनिंग शुरू करी एंड आई थिंक वी वर इन 3rd or 4th day of our training. Suddenly our captain Arshad came and he said, sir, लाइट्स में ट्रेनिंग करी नहीं, परसों तो मैच है हमारा, हमें निकलना है ग्वालियर के लिए. तो आई सेड यार लाइट्स तो है ही नहीं हमारे पास. सो वी ऑब्वियसली फाउंड आउट भोपाल में एक ही ग्राउंड में लाइट्स थी. वी रीच आउट टू देम बट somehow it didn't work out well. And I think that was the point of time I told my team, yeah, see, this year to whatever we have to manage, we manage. But next year, I promise you, we'll get you lights and a good ground so that we perform well in the tournament. And I think that's where our bigger vision of infrastructure started. And today we have, I think, one of the best infrastructures for cricketing in the city at least. So we are very proud of that. इवन इन एमपीएल जितना मुझे पता है, आप एक लौती ऐसी फ्रेंचाइज है जिनके पास खुद की अकेडमीज है. उससे कितना फर्क पड़ता है? हाउ डू यू नो आइडेंटिफाई टैलेंट फ्रॉम देयर? टेल अस मोर अबाउट इट. I think academy structure was a vision which actually brewed even before MPL started, because when I used to play, there were some great academies. But unfortunately, over the period of time, Bhopal में academy culture बहुत गिर गया था. So what we thought was कि if we put a good academy, I think it will help us to do a good talent hunt. और लकीली MPL में क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर के बाद आर्यमन सिंधे, who was the chairman of MPL,
he said that we will do a concept of development players. Now these are players who were never played for Madhya Pradesh at any level, be it district, division or state, but have to be identified as raw talent to bring up. And I think that academy and that thing really gelled up. So we had students coming and different people. I mean, and it's a pretty frenzy actually. जब भी डेवलपमेंट प्लेयर के ट्रायल अनाउंस करते हैं हम लोग, उन्हें इतने इंस्टाग्राम भर जाता है. हम एंड पीपल में वीडियो टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, सर देखिए हम छक्का मार सकते हैं, हमें खेलना है. सो आई मीन इफ यू आई शो यू माय इंस्टाग्राम अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, आई गेट एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस. बस वो अपनी वीडियो भेजते रहते हैं, सर ट्रायल के लिए आ जाए, बुला लीजिए, सर खिला लीजिए. एंड इट आई मीन ऑब्वियसली पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर अ प्रोसेस टू इट, बट ठीक है. आई मीन but I think academies works out that, and also getting academy was also a way to inspire the young kids that see, if you do well here, this is where you will be. And hence we named it Bhopal Leopard Academy, because we wanted to continue the brand name and inspire the younger people. If those people who are like you could play at a good level and now go to IPL also, so that's a chain. And I think that's working out well for us. इस बार कोई लड़के दिखने वाले हैं हमारी एकेडमी से भोपाल लेपर्ड्स में खेलते हुए? भोपाल लेपर्ड्स में इस साल 4 लोग हैं जो हमारी एकेडमी से खेल रहे हैं. दोनों डेवलपमेंट प्लेयर भी हमारे एकेडमी से ही हैं. एंड दीज 2 किड्स, एक तो कुणाल राय जो विकेट के बैट्समैन है, वो लास्ट ईयर कैंप डेवलपमेंट प्लेयर है. ही इज एक्चुअली फ्रॉम जागरण, आवर ओन यूनिवर्सिटी, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, द स्टूडेंट देयर. सो वी आइडेंटिफाइड हिम इन द यूनिवर्सिटी लेवल व्हेन वी वन द रेड बुल कप, व्हिच इज द नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी कप. So we identified him there, and then we got him to the academy, shined him more, and then took him to the MPL development player trials and got him from there. So actually क्या है कि everything is like a strategy, how you identify and how you do. So बहुत ऐसी, मनीष भी ऐसी रूट से आया है. Plus the good part is the kind of players and coaches we have, they are very connected to the grassroots cricket. And they keep a lookout कि कौन नया प्लेयर आ रहा है, क्या आ रहा है. अभी भी even though Arshad, our captain, is playing for GT, but अभी he called up just 2 days before our first camp and said, sir ये बच्चे को, ये अभी खेल नहीं सकता है डेवलपमेंट, because you have to be 18 and above. He's 17, but इसको इस साल ही साइन कर लो आप. And I mean we signed him up at 17 years, and he is like a rocket left arm fast bowler. Okay. And he's already part of our squad. He's traveling with us everywhere, in the camp, everywhere, and we've signed because we know next year he's going to be part of our team. So that's how the broader vision has to be, and I think it's working out beautifully for us, because everyone in the team, be it players, coaches, are all committed. And as a management, मेरा इतना काम है कि we keep facilitating them, supporting them, and they can do their work beautifully. On a lighter note, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही ट्रेन करूंगा, मैं ही जितवाऊंगा. नहीं, ऐसा नहीं है. आई थिंक टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट because of education institution and the infrastructure we get with the education, it's become simpler for us to align everything. But मेहनत तो उतनी करनी पड़ती है, चाहे आप एजुकेशन में हो या स्पोर्ट्स में हो. सो इट इन अ वे आई वुड से आई एम लकी दैट आई कैन do my professional work but also live my passion through cricket and this team. So it is a great combination to be with. So technically May आता है and I just switch off from work and then I'm focusing on cricket कि अब 2 महीने cricket पे focus करेंगे and then let the season go and then let's see how we go about it. आपने एक मजेदार बात बोली, ये इवेंट टेलीवाइज्ड होता है. हम सब क्रिकेट खेलते हैं, बट टेलीवाइज्ड होना, जियो हॉटस्टार पे लाइव आना मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इसके पीछे एक कहानी है कि आपने एक बार टीम को फटकारा था, जब आप, और इसी बात पे फटकारा था, ये मैं जानना चाहूँ. So हुआ क्या था, फर्स्ट सीजन में हम फर्स्ट 2 मैच हार गए, एंड मी एंड कोच वर थिंकिंग क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है. एवरीवन इज गोइंग जस्ट हिटिंग सिक्सेस, ट्राइंग टू हिट सिक्सेस, लग तो रहे नहीं था किनसे. एंड देन वी रियलाइज कि दिस इज टेलीविजन. मतलब एवरी शॉट दे यूज्ड टू, थोड़ा स्वेट आ गया तो ऐसे पूछने लगते थे खड़े होके. सो वी वर सेइंग भाई तुम टीवी के लिए तो ना खेल रहे हो, क्रिकेट तो खेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग. And I think our coaching staff was very, very blunt. They said, भाई ऐसे चलेगा नहीं, कोई टीवी में पूछेगा नहीं तुम्हें, अगर हार जाओगे तो खेलो, मैच खेलोगे तो अपने आप स्टार्स बन जाओगे. So I think sometimes giving reality checks is very important. IPL players हैं, उनको तो आदत है, but lot of players, I think हमारे साल एक ही IPL player था, अर्शद, no one else. Right. So
एवरीवन वाज वेरी ऑड कि इतने 16 कैमरे, इतनी लाइट्स, पब्लिक, एकदम लोग को समझ नहीं आता हो क्या रहा है ये सब, बिकॉज जनरली स्टेट लेवल लीग में यू डोंट सी दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, बिकॉज वो फर्स्ट सीजन था तो फायरवर्क्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, चेयर गर्ल घूम रही है, तो वो सब एकदम ओवरऑड हो गए थे सब लोग. बट आई थिंक एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम, right intervention given by our staff, our team, management, I think it was much needed, and I think from there our journey was great. I think अगर आप एमपीएल पूछोगे ना तो एवरीवन सेज भोपाल लेपर्ड इज ऑलवेज लाइक अ काउंटर कमिंग बैक, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाता है या कुछ ना कुछ बैक एंड पे गिरते हैं, फिर वो एकदम से उठ के आ जाते हैं. सो आई थिंक वी हैव बीन अ टीम ऑफ कमबैक्स इन द टूर्नामेंट बोथ द सीजन्स टिल नाउ. So I think the way we train or the mindset we are in before the tournament and in the tournament, I think that plays a very big role. और इसी कारण I think we are doing so well in the last 2 seasons and hope we continue. घायल लेपर्ड और खाते आपने बोला आपके पास एक ही प्लेयर था अरशद खान जो आईपीएल खेल रहा था. नाउ वी हैव अरशद खान, अनिकेत वर्मा, शिवांग कुमार, माधव तिवारी. हमारी टीम से 4 प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे हैं अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए. भोपाल लेपर्ड्स का कितना कंट्रीब्यूशन है उनके आईपीएल खेलने में? See, I personally feel player individual मेहनत से ही खेलता है आगे. As a team, we've been able to give them a platform. Because the team game, everyone's contribution brings someone's individual performance to highlight. एक बॉलर कितनी भी अच्छी बॉलिंग कैच नहीं पकड़ेगा, कोई दूसरा तो क्या करेगा, वो तो 0 ही विकेट माने जाएंगे. Unfortunately, the game is of stats. और अगर स्टैट्स नहीं है तो नहीं है. हमारे से लकीली आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा हुआ कि फर्स्ट सीजन एंड उसमें हमारे परफॉर्मेंस से, बिकॉज वी वर रनर्स अप एंड फाइनल, सो वी प्लेड अ लॉट ऑफ मैचेस. एंड लकी बात ये है बिकॉज फाइनल सेमीफाइनल में स्काउट्स आर ऑलवेज देयर. सो इफ योर टीम इज नॉट मेकिंग सेमीफाइनल फाइनल, तो यू डोंट जनरली सी द स्काउट्स इन बोथ द सीजन बिकॉज वी वर इन सेमीफाइनल फाइनल्स. एंड ऑनेस्टली मेरे को याद है फर्स्ट सीजन के फाइनल्स में when we were playing finals, I was sitting with almost all the scouts. So MSK Prasad was there, VVS Lakshman was there. All the IPL team scouts were in my pavilion only. We were sitting and they were saying, Bhopal Leopard match जीत गए यार, खत्म करो tournament. And from that level we lost. So I mean that was a real shock. But the kind of praises these people gave us was amazing. And I think first season के बाद we got Madhav and Aniket going to IPL. So 2 लोग IPL चले गए. And then second season by Shivang also got through IPL. Kamal was almost there as a finalist for KKR, but he couldn't make the cut. So it was great, I think. And I think the way the league has helped people to grow. Where I think when we started the league with 6 teams, 1 IPL were given to everyone कि भाई यही है तुम्हारे ड्राफ्ट है, ये 6 प्लेयर है, आप इससे टीम बना लो. Next year that went to 12. This year that went to 16. So the league is growing, giving them platform, and I think that's what the contribution of the league is, giving platform to the players, bringing the right people to see the talent, and being televised में फायदा क्या है, everyone is seeing it, you can't hide. So player also know कि हम करेंगे तो वैसे दिखेंगे. And I'm seeing from year 1 to 3rd season, players are prepping them for MPL. जो prep probably मुश्ताक अली के लिए करते होंगे या सीजन के लिए they are more prepping for MPL because they know this is a direct access to IPL at least, if nothing else. And you agree or not, everyone, but IPL has now become the pathway to the Indian team. I mean, टेस्ट से जाते हैं तो जमाए निकल जाते हैं, बट आईपीएल में अच्छा करा तो फटाक से ऊपर पहुंच जाते हो. So they are seeing this as a more shortcut format. So everyone is preparing, and I think this year some of the players which we had last year we can't even recognize. First year से हमारे पे सूरज यादव है जो first year हमारे साथ था. You can't recognize. I mean, Suraj Yadav didn't make a cut to even a single playing 11 for us. And this year he is like different person altogether. And I think the growth in players is evident that they know that this tournament is the most serious tournament which they have to play in the season. So they're preparing for it mentally, physically, skill-wise. I think sooner or later it will change the landscape of cricket in Madhya Pradesh at least. I think great initiative and a great way this tournament is happening. See, how does it feel to be a champion side? वो feeling क्या है? Last year when we won, I think
वो एक फीलिंग है, वो कभी मतलब मेरे दिमाग से निकल सकती। आई मीन द काइंड ऑफ इमोशनल आउटबर्स्ट वी हैड बिकॉज वी वर रियली गनिंग फॉर इट। और बट आई थिंक चैंपियन बनना एक माइंडसेट है, इट इज़ नॉट ओनली स्किल। अगर आप माइंडसेट नहीं है तो यू कैन नॉट बिकम अ चैंपियन। आई थिंक यू हैव टू बिलीव। आप आज आप देखो आईपीएल में जब भी हमारे कोई टीम का प्लेयर खेलता है, दे ऑलवेज से भोपाल एफर्ट से आया है। इट्स ऑलवेज अ वेरी प्राउड मोमेंट कि एट नेशनल लेवल पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग अस। एंड आई थिंक एज अ franchisee for us it is very important because we are the franchisee who's given maximum number of IPL players out till now in 2 years. So it's a great moment as a franchisee, and I think championship is a taste of success which you want every year, and we are trying our best that we retain that thing this year. आपने बोला सारी नजरें आप पे होगी, थोड़ा प्रेशर होगा। आपने चैंपियनशिप जीती, नई टीम्स आई, ऑक्शन हुआ, पहली बार लीग बड़ी हो गई है, बहुत सारे कोर प्लेयर्स गए भी होंगे आई एम श्योर। Yeah. Does that shake your confidence in some way going forward in this season? It doesn't shake confidence, but obviously strategy has changed a lot. I mean, we were pushing the organizer, the MPCA and the GDCA to get the auction in the second year because it's very difficult that in a draft situation you're getting a new team every year. To build the continuity, to build things, it is very difficult. Uh, Obviously, this year also a reset has happened with auction, with teams increasing. When teams are increasing, you have a budget. Obviously, player will distribute, which is very great for the league at least. But मुझे लगता है कि अब we are here for 3 years, this squad. We can build something really great. We know opportunities, we know skills, we know what is the strength, weakness. We can work with players over the years. And in a way, we are lucky that at least 4 players from our last year squad are with us back. Okay. And especially we could retain a captain, which was very, very important for us. And I think we were very, very lucky. Aniket भी मिल गया हमें. So I think now it's only about strategy making with the talent we have, the skills we have. And I think it's going to be a continuous process, which I think is great. It's great for the league. It's great for a franchisee to build a brand because we know what we have, how we are going to do, and I think that's where we're looking at. You mentioned you retained अरशद, आपने कैप्टन को रिटेन करा। हमारे पास 4 प्लेयर्स थे जो आईपीएल खेल रहे थे। आपने अरशद को ही क्यों चुना, उन्हें ही क्यों रिटेन किया? Why अरशद? The kind of stable mindset he has is very rare to find. Plus the skill set he brings is also very rare to find. He had a great season with Mushtaq Ali this year, and I think जो वो calmness team में लेके आता है, I think that's very, very important as a group. At the end of the day, MPL winning captain है वो. Everyone wanted him. So it was our chance to retain, and the kind of involvement now he has shown in the last few weeks, even while he's in GT playing his games, being in touch with us, what's happening. So which shows that he is very, very now connected to the team. And I think he is the kind of leader which Bhopal Leopard want to have. Abhishek, one more thing. What's the story behind the campaign Bhopal ki apni? The idea was that any local random person of Bhopal should say proudly that yeah, Bhopal Leopard is our team. And I think the day we'll be able to achieve that, obviously it'll take time, but the day we'll be able to achieve that, I think that will be the biggest success for this true victory of this franchisee. Trophies will come and go, good performance will happen or not happen. But our vision is that one day, even if it's Indore, Gwalior, or wherever in Madhya Pradesh, people start traveling to see our match. And I think that's where we are looking to go. And we have started a little bit of work this year. But I think next 2 to 3 years is our vision is that we have a very solid, loyal fan base. As an owner, आप कितना involved हो? How much is your role? I'm very clear on this aspect from day one to understand what is required now or what players to pick. It is up to the coaches and the support team, and I've been lucky that these people are there with us. I think my role starts and finish at the strategy point of view. A lot of marketing decisions, brand building decisions is taken by me. Obviously, captain selection mein I have a lot of say.
but where the players are doing and how, what is the strategy we are going to pick, I pretty much leave it to the head coach. And I mean, it's about how much you believe in your team. And what I've seen is, if owners start getting involved too much into operations, teams don't work because they don't have that understanding of what is required of the current situation. They generally look from a perspective of what is my wish, and that doesn't work in sport, to be very honest. हैविंग सेड दैट कि आप फ्रीडम देते हो अपने प्लेयर्स को, अर्शद द कैप्टन को, आपका रिलेशनशिप कैसा है विद द एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हु आर योर कोचेस, Yeah. ओमी दादा एंड मुर्तजा सर? So, Omi Via का ऐसा है कि Omi Via was running trophy captain when I started playing, and always inspired me. And he used to train in the same club. So me, JP Via, Omi Dada, we all trained in the same club. And when I came back after playing under 15, they pretty much took me under their mentorship that ठीक है इंडिया खेल गया है, थोड़ा we should mentor the young kid. तो मेरा रिलेशन तब से उनसे है, ऑन एंड ऑफ मिलते थे, बात करते थे. बट व्हेन वी बॉट द टीम, आई वाज वेरी क्लियर कि भाई, इनफैक्ट बिफोर संजय पांडे वी फाइनलाइज ओमी टू बी पार्ट ऑफ द टीम, एंड आई कॉल्ड हिम स्ट्रेट अवे, आई ये करना है अपने को. ही नेवर आस्क्ड कि क्या आप मुझे सैलरी दोगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा. एंड देन फर्स्ट सीजन के बाद आई सेड यू हैव टू शिफ्ट टू आर, we are starting an academy and I wanted to be leading this academy also. He shifted his base from the previous academy he was at. I think he was very, very, very comfortable. And I think एक mutual respect का relationship है. He obviously understands cricket beautifully. जैसे मैंने आपको पहले बोला कि it's about giving him the freedom, the space to do his stuff, and trusting that he will do best. Now, result will come well in the ground or not, that's a different case. He can't really control. He's very calm, and that's what is required. And with Murtaza adding, I mean, this year when we said कि we want to have another coach, and we both were clear कि batting तो चलो we संभाल लेंगे, what about bowling? So we wanted a bowler coach to come, and a fast bowling coach to come was pretty much a replacement of what we had before. तो दैट वॉज अ डिसीजन वेरी स्ट्रैटेजिकली, बट आई लेफ्ट इट टू हिम. मैंने एक ही क्वेश्चन बोला कि आपको उनका काम करने में प्रॉब्लम नहीं है? बोला नहीं, तो इन्होंने रख लो. एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉज फाइनलाइज, साइंड बाय हिम बिफोर आई मेट हिम ऑल्सो. तो दैट वॉज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वी हैड. अभिषेक, थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा, भोपाल जैसा छोटा सा शहर है, सब सबको जानते हैं, बहुत सारे फोन आते होंगे, इसको ले लेना, उसको ले लेना, ये देख लेना. हाउ डू यू टैकल दैट एंड स्टिल बिल्ड अ चैंपियन साइड? मेरे पास एडवांटेज है एजुकेशन का. एजुकेशन में भी ऐसे ही होता है, जैसे एग्जाम शुरू होते हैं अटेंडेंस देख लो, अटेंडेंस से कर लो. सो आदत है ऐसे लोग को टैकल करने की. बट आई थिंक बीइंग ट्रांसपेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन द डे ऑफ ऑक्शन आई हैड अबाउट 100 मैसेजेस विद ओनली ऑक्शन नंबर्स रिटन ऑन इट कि ये A32 को ले लेना. A32 करता क्या है भाई? बट माई रिस्पॉन्स सिंपल, दिस डिसीजन डजंट लाई विद मी, इट लाइज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम एंड द कोचेस डिसीजन. And more or less Arshad's decision. So auction में Arshad was on the video call with us throughout, ओके. and he had made 10 combinations of the team he wants. We had made 10 combinations what we want, and then we tried to merge. And we were pretty ticking, Arshad को ये चाहिए थे, मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए. So हमारा बहुत सिंपल है कि यार नहीं हो सकता. डेवलपमेंट प्लेयर टाइम में भी we had about 800 entries for one person. So it was chaos. People were calling left, right, center. But I think as a management यही मेरा काम है कि इस चीज़ को ब्लॉक करना, कि ये प्रेशर सिलेक्शन पे नहीं है. So that is how I am able to support the team by absorbing this pressure out. I think that's a lot of experience which has come from education. एजुकेशन में यही होता है पूरे समय. हमारा काम स्कूल चलाना होता ही नहीं, यही सभी करते रहते हैं कि ये हो गया सर, इसको बाहर टर्मिनेट कर दिया आपने, इसको निकाल दिया, इसको रख लीजिए. ये तो we know how to handle this kind of pressure in a like a very good way. You mentioned auction का भी कुछ प्रेप किया था क्या आपने? We did 2 dummy auctions ओके. with all support staff. जितने भी हमारे लोग स्पोर्ट्स कोचेस हमारे स्कूल में, सबके की टीम बना के, and we auctioned and we saw what combinations, what prizes are coming. And I was surprised when we went to auction, pretty much we were very close on each person's bidding. So we did 2 sessions, about 10 hours a day we spent doing this.
so that we know what's happening. And I think this was again an idea of Arshad that you need to do it. So Arshad, when we retained him, he was the one who said you need to do 2-3 auction training, and so that you know what's happening. Otherwise auction में जाके freeze हो जाओगे, and don't be excited on getting people in. So we were very clear कि इस player के लिए minimum and maximum value हमारी यही होगी, इसके ऊपर नहीं जाएंगे. So we had minimum and maximum for every player we wanted, or every player who was part of the auction. And it was again great work done by Omi and Sumit and all these people, because they were very clear क्या हो रहा है. We strategically hosted a Jain Bhaiya tournament in Shrewsbury so that we can see the players in here and we don't have to travel around too much. So that played out well. You mentioned Rajasthan Royals. So we all know IPL teams, how they make money. How does your team make money? So I think more than money right now, it's more like a passion project. I don't think any team in the league makes money right now. But how the league has grown in the state is tremendous. We are the biggest league, state league in the country right now with the maximum number of teams. There's no league in the state which has more than 8 teams. We are 10 teams already, which means that there's a lot of money coming into the league. From where we bought the team at what cost and what cost the team got sold this year, there's what, 3, 4, 5x. So valuation बढ़ रही है. Valuation बढ़ रही है. Sponsors are looking at us. Right. And I think it will take its time. People will make money. But I think if you don't have the passion to run a team or passion towards a sport, people will not be in the league for long. So it's also about how much you want to. I mean, some looks at it as a marketing thing and push their marketing budget towards the team and say, "ठीक है, ये marketing हो गई हमारी." For people like us, we want to create an infrastructure. We want to create a complete sports ecosystem. So we look like that. Different owners will have different perspective, but the league will take its time. I think 2-3 more years. अब जब second major auction होगा 3 साल बाद, that is when I think a lot of money will be made. आपने जैसे बोला कि पूरे कंट्री में सबसे बड़ी स्टेट लीग है और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ से IPL भी खेल रहे हैं. That's very commendable. Very commendable, I think. Madhya Pradesh cricket has done some amazing work in last 2 to 3 years. I think the cricket is going super in Madhya Pradesh, and I think this league has just elevated the whole situation to a next level. किस प्लेयर को आपको बजट जो आपने मन में सोचा था उससे बहुत ज़्यादा बिड करके लेना पड़ा एंड क्यों? More or less सभी प्लेयर्स हमने विद इन बजट ही लिए. आई थिंक जब हम लोग बिडिंग कर रहे थे, हम बहुत लोगों ने जो लाइव देख रहे थे, वी हैड द RTM स्ट्रैटेजी में हमारा थोड़ा सा मिस नहीं हो गया, वी वर लकी एक्चुअली. सो हमें जब बिड पे गए थे तो वन ऑफ अ कॉम्पिटेंट टीम हैड ऑलरेडी अनाउंस दैट आवर कैप्टन विल बी लोकल. सो वी थॉट अनिकेत गया. तो हमने तो अनिकेत को पहले दिन जब प्री ऑक्शन मीटिंग करी हमने टीम की, तो हमने पहले ही मन बनाया था अनिकेत नहीं मिलने वाला हमें, तो गया बिकॉज उनका वीटो था. ऑब्वियसली समवन विल टेक अनिकेत. बट आई थिंक एंड व्हेन नाम आने शुरू हुए तो माधव का नाम आया था एंड वी वेंट ऑल आउट. वी सेड चलो अनिकेत तो मिलना नहीं है, माधव ही लेते हैं and see how we go. We will have 2 fast bowlers. Our fast bowler quota will be over, and 2 all-rounder fast bowler makes it more better. And plus Madhav का performance at 23 में बहुत amazing है सर. So we thought चलो माधव मिल जाएगा. We'll have good 2 bowling batting all-rounders. Our all-rounder category will get over sorted. So we had already planned bid किया जब I think Malwa Falcons. So they bidded highest and we said RTM. So I think 10 लाख 20,000 या कुछ अमाउंट में वो गया था. So हमने RTM किया. The auctioneer gave the auctioneer gave us the bail नाम की. हम रखने गए, उतने में फाइल करने बोला नहीं वीटो. तो फिर हमने उठ के आपने देखा अमन ही गया और बोला भाई आप ही रख लो यार इसको. But what happened with that was we realized that ये वीटो गया तो इनका 3 नई टीम थे, तीनों का वीटो था. एक वीटो खत्म हो गया. हमने बोला अब कोई भी अब अनिकेत हमारे पास आ गया. एंड देन मी एंड ओमिता सेड कि लेट्स गो ऑल आउट.
We need one solid person, and because indoor ground थोड़ा छोटा है, batsmen play like a huge role. And with Aniket, the day he works, it is magic then. Then I mean, if Aniket scores 50, you know that you have won. लंबे लंबे हाँ, मारता है, और बहुत छोटा सा लंबे ग्राउंड है, मारता 58 मीटर्स तो है ही ग्राउंड. सहवाग ने 200 मारी थी वहाँ, हाँ, मुझे याद. तो हमने फिर बोला चलो अनिकेत पे जाते हैं, एंड वी वर लकी, नो वन डिड वीटो एंड वी वर शॉक्ड क्या हुआ, एंड वी गॉट अनिकेत इन. रैप माय हेड अराउंड, आपको अनिकेत मिल गया और वीटो नहीं किया हाँ. किसी ने. तो हम लोग रहते हैं वीटो भी नहीं हुआ, हमारा आरटीएम भी बच गया वाह. और हम बच गए. तो जैसे ही हमारा आरटीएम खुला, हमने बोला अब तो कमल मिलना ही है, हमें आरटीएम कर देंगे हम सारा. तो फिर हमने कमल में आरटीएम कर दिया. तो वी गॉट 3 कोर. आई थिंक वी वेंट फॉर प्रांजलपुरी, हमारा अगेन पैरेलल टू, आई नॉट से पैरेलल बट सिमिलर कॉम्बिनेशन एज माधव, because when we lost Madhav, we knew we need a bowling all-rounder, fast bowling all-rounder. And I think Pranjal Puri was the only one we went little hard because we didn't have an option, to be very honest, because we wanted all-rounder to come in the center. And he's been doing good. He's part of our academy from last 1 year. So we've seen him grow over the last 1 year. And last year also he performed pretty well in the MPL. I think he was the only one we really pushed and went hard for. कोई ऐसा प्लेयर जिसके लिए दूसरी टीम्स की आपने बेट बढ़वाई हो? वो तो स्टैंडर्ड काम था हमारा. हमें तो मालूम था कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, वो छोड़ देना है प्लेयर को. ए कैटेगरी में 3 प्लेयर लेने थे, वो ले लिए. बी में हमें 1 ही लेना था, हमने ले लिया. और फिर हमें डी में लेने था, सी में लेने ही नहीं था किसी को. हमसे बिड बढ़ा रहे थे लोग की, बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे थे. आई थिंक इट वर्कड आउट वेरी वेल. या इट वेंट आउट वेरी गुड ऑप्शन. What does HMG Sports does? We run multiple academies around it, be it shooting, cricket, football, swimming, basketball, all the kinds of academies, and ensure that the best of facilities are provided to budding sports players of different areas, different games, and bring a professional system into the whole picture. Because coaching कराना, professional coaching कराने में बहुत difference होता है. और वही डिफरेंस को हम फुलफिल करना चाहते हैं. बिकॉज कुछ कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है एमपी, बट कुछ कुछ स्पोर्ट्स में बिल्कुल मज़ा नहीं है. सो ब्रिंग इन द एंगल ऑफ न्यूट्रिशन, फिटनेस, स्किल, ब्रिंग इन द बेस्ट ऑफ पीपल हु आर सेटिंग एग्जाम्पल्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स टू स्टूडेंट्स, उनसे बात कराना, उनसे करना. I think those are the little things we do through HMG, and I think that inspires a lot of people. अभिषेक, बीसीसीआई का काफी एम्फेसिस होता है ऑन मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, करप्शन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. क्या एमपीएल में भी सेम चीज अप्लाई होती है? As you know, this league is approved by BCCI. अप्रूव्ड बाय बीसीसीआई. So BCCI appoints anti-corruption unit. So to ensure that the game is played fairly, no corruption, match fixing, all that kind of stuff happens. So अगर आप मैच डे पे जाते हो, as owners, if I see from an owner's point of view, we are not allowed to go into dugouts. We are not allowed to go in the changing rooms till the match is over. As soon as you enter the stadium, all the players, managers' phones are taken, and I think it's a fair way to do it. They keep doing a lot of workshops during the tournament. अभी जैसे मैच टूर्नामेंट शुरू होगा तो they will have a meeting of the owners and the captains together. What is do's and what is don'ts. Because I think fairness in cricket in sport in general is very important. Yeah. And if the apex body of that particular sport is handling it, I'm sure it generally handles pretty well. And these people are very brutal, I think. थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट होता है, it's a suspension straight. And suspension का problem वो नहीं है कि league suspend. The player will get suspended through across BCCI. कहीं नहीं खेल वो कहीं नहीं खेल पाएगा, 2 साल के लिए बाहर. And 2 years break in this kind of sport, competitive sport, is very big. 2 साल आपने नहीं खेला और कुछ ना कुछ आएगा आपकी जगह, खत्म वो करियर. So players are very, they know what's happening and they are very very careful. So basically no dugout, no dressing room, not on the ground, phones are not available. So basically देखा जाए तो एक ओनर प्लेयर से बात ही नहीं कर सकता, नहीं कर मैच सकता. के बाद ही कर सकता. हाँ, मैच से 2 hours before से लेके end of match तक you can't talk, not even the break. अभिषेक, अभी एक शो बहुत पॉपुलर हो रहा है, सपने वर्सेस एवरीवन. व्हाट डू यू थिंक, सपने देखना कितना इम्पोर्टेंट है किसी के लिए? मेरे ख्याल से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सपने देखना एंड बट ऑल्सो टू वर्क टूवर्ड्स इट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप सिर्फ सपने देख के बैठ जाओ तो अपने आप तो कुछ भी नहीं होने वाला. सो यू हैव टू ऑल्सो सी अ पाथवे टू वर्क टूवर्ड्स इट.
For me personally, writing down those dreams is a way to work around it. So अगर आप मेरे मोबाइल पे there is a full folder which only has ideas करके एक folder है, उसमें जो भी समझ आता है, कुछ भी कहीं पढ़ता हूँ, कुछ देखता है कि हाँ इससे कुछ हो सकता है, तो I'll just note it down. एंड देन कभी सूनर लेटर कभी समय मिला तो उस पर रीवर्क किया, देखा कि 5 चीज़ मिलके एक ही चीज़ बन रही है तो जोड़ लिया, एंड दैट्स हाउ यू वर्क इट. सो एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे टू डू इट, बट आई थिंक ड्रीमिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू. वो आइडियाज वाले फोल्डर में भोपाल रेपिड्स लिखी थी क्या कभी? आई थिंक वो नहीं लिखा था, बट ये जरूर लिखा था कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में एंटर करना है. एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप आज भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते हैं? अब कभी कभी आई थिंक वीकेंड्स whenever जिस it's टीम से possible. खेलते हैं उसका कैप्टन कौन है? This guy. Yeah, this guy.